कि मैं एक सवाल सिर्फ कैस से पूछना चाहता हूं। कैस, हाउ डू यू फील टुडे? Today's action was बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। I think you feel great। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया के फैंस की बात करते हैं, obviously ladies and gentlemen, they're not happy। और न्यूजीलैंड के हवाले से जो हमने पहले गुफ्तगू की थी, जिसके अंदर हमने ये मेंशन किया था कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले 11 सालों से नहीं जीत सका। मेरा ख्याल है आज उन्होंने वो तारीख रकम कर दी जिसकी उनको जरूरत थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम अफगानिस्तान की बात करेंगे या हम इंग्लैंड की बात करेंगे, जो कि हम करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इंट्रोड्यूस आवर पैनलिस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ दोज people who are out there. So first up, ladies and gentlemen, all the way from South Africa, we're lucky to have been joined by a coach and then a former cricketer of the South Africa. Ladies and gentlemen, he is Mr. Lance Klusener. Thank you very much for joining us. Wonderful to have you. और उन्हीं के साथ तशरीफ फरमाए खवातीनो आज़ाद साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैटर, ये है मिस्टर राशिद लतीफ। अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम बैक। बहुत जरूरी सवालात कर रहे हैं हमने अपने इन पैनलिस्ट से, क्योंकि जो सुबह में बात हुई थी उसके बरक्स कुछ ग्राउंड में हुआ, लेकिन साथ ही साथ मौजूद है। ये सुबह में हमने तंज और मजाक में ये बात जरूर की थी, लेकिन दिल से पाकिस्तानी है। ट्रेवल किसी और पासपोर्ट के ऊपर करते हैं। ही इज अ कोच, लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वंडरफुल अमेजिंग क्रिकेटर ऑफ हिज टाइम। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज मिस्टर अजहर महमूद। अजहर भाई, वेलकम बैक। Thank you very much. Thank you very much once again, and last but not the least, प्यार से हम सब इनको प्रोफेसर कहते हैं। Very relevant, ladies and gentlemen, he is the former skipper for Pakistan, और पाकिस्तान को इन्हीं के नंबर के ऊपर इन्हीं जैसे दूसरे खिलाड़ी की तलाश है। ये है मोहम्मद हफीज। हफीज भाई, welcome back. Thank you. I think first things first, why don't we take a good look at the match summary? Cass, you want to lead? Yeah, let's do that. England against Afghanistan. Let's start there because that was our second match of the day. Everyone said that England could absolutely roll over Afghanistan. 112 on the board. I think Afghanistan will be very disappointed with that. They were 81 for 3 at one stage, played quite conservatively, kept wickets in hand, but in the end they lost 5 for 3. So at 112 all out, England would have fancied a big win, right? We talked about net run rates, and right at the first day of Super 12, but a 5-wicket win, they're going to go back and think, what did they do wrong that couldn't have gotten them to a point where they'd leave there thinking net run rate is taken care of? Because remember, they play Australia next week at MCG. Yeah. And you're playing the old enemy knowing that you didn't leave it all out there today against Afghanistan. Exactly, which is why I think it's about time that we actually come back to New Zealand versus Australia, because you spoke about the net run rate. First things first, Lance, I'm going to move on to you. इन सब ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया लगता है कि जीत जाएगा। 30 रन का डिफरेंस लेके जा रहे हैं, तो 20 ओवर में कितना डिफरेंस हो गया? वही हुआ जो I think he was brilliant. He showed the pressure on the opposition. Mitchell Stark and Hazelwood. So first 4 over, 5 over, I think they were far ahead of the game at that period, and that makes a lot of difference. Yes, we talk about, Kane Williamson came in and played runner ball innings, but the other guys were playing around him, and that's the way they batted throughout. If you see when Finn Annan got out, and then Conway took over his role, and he was playing shorts. He's taken his time when Finn Annan was going, and after that he played his shorts. And then if you see towards the end, the way Nisham finishes innings, a strike rate of I think 240 out of 250, which is really, really good side. And they said, and I spoke early morning, I said, like these guys, they know how to play in this format, and they come with a game plan, and they've attacked them straight away, and I think it was phenomenal. Well done to you guys. एंड बहुत स्ट्रॉन्गर थी, उनकी टेक्निक बहुत स्ट्रॉन्गर थी, क्या वजह थी? I think
इंटेंट उनका बहुत तगड़ा था, लेकिन अगर आप देखें जो मिचेल स्टार्क ने अपना पहला ओवर किया ना, अगर आप बोल्ट का पहला ओवर देखें और मिचेल स्टार्क का पहला ओवर देखें तो उसमें आपको एक चीज नजर आएगी कि उसकी रिस्ट बॉल के पीछे नहीं थी, जिसकी वजह से उसका बॉल वैसे स्विंग नहीं हुआ। तो ये फर्क था बोल्ट में और मिचेल स्टार्क के उसमें। तो उसका बॉल वैसे स्विंग नहीं हुआ। अगर आप बॉल देंगे तो मैं आपको बॉल कैच कराऊंगा ये। जी हाँ, तो उसकी रिस्ट जो है ना वो ऐसे आ रही थी, ये वाली उंगली उसकी हटी हुई थी, तो वो बॉल के स्विंग नहीं हुआ। अगर आप बॉल का देखें तो उसका बॉल अच्छा स्विंग हो रहा था। अगर आप देखें तो सीम इस तरह जा रही थी इसके, बिल्कुल, तो वो उसका बॉल स्विंग हुआ। तो वो ये फर्क है। अगर एक चीज है, यहाँ पे जो न्यू बॉल है ना, यहाँ स्लो ओवर नहीं करनी चाहिए। T20 फॉर्मेट तो है, लेकिन यहाँ पे जो अदर बात कर रहे हैं कि स्विंग अगर करनी है तो उसमें अगर 2-3 स्लो, एक मिचेल स्टार्क ने पहले ओवर में स्लो की है, ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर स्लो ओवर पे थोड़ी जाओगे आप जाओगे पेस एंड स्विंग के ऊपर। तो अदर जो बात कर रहे हैं बिल्कुल उसको बात ठीक है कि उसकी रिस्ट प्रॉपर नहीं लग रही थी। और उसका बिकॉज ही इज अ लेफ्ट हैंडर अगेंस्ट राइट हैंडर, जब आप बैटिंग करते हो ना उसकी लाइन इतनी अच्छी होती है, लेकिन आज क्या उसको मार क्यों पड़ी कि वो बहुत ज्यादा फुल था। जो सुबह हफीज ने बात की थी कि जो 6 मीटर की लेंथ है ना, नेकिंग लेंथ जिसको आप कहेंगे कि ये वाली, लेकिन वो आज उन्होंने बॉल की यहाँ पे, क्योंकि बॉल स्विंग नहीं हो रहा था तो ईजी था कि उनके बल्ले पे आया तो उन्होंने उसको बॉल को हिट किया। एग्जैक्टली। अब जरा हफीज भाई की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। हफीज भाई, व्हाट सर्टेनली आई वुड वांट टू आस्क यू इज, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आज की पिच कंडीशंस थी वो न्यूजीलैंड को ज्यादा सूट करती थी, क्योंकि एविडेंट यही था कि वो जो स्टिकी कंडीशंस थी वो न्यूजीलैंड के जरा हक में ज्यादा थी। सबसे पहले तो मैं साइमन डोल और ईशा, इन दोनों के कान पकड़वा दूं। मैं ये बात करने लगा था अभी आपसे, क्योंकि उनकी जो पिच रिपोर्ट थी उसके अंदर था स्टिकी होगा, दिस होएगा, दैट होएगा, कुछ भी नहीं आया। सो आई बिलीव लाइक ऑन अ टेक्निकल साइड ऑफ द गेम, आई थिंक जो सबसे अच्छी चीज जो मैं पहले कह चुका हूं, द मॉडर्न क्रिकेट हैज चेंज इन अ राइट वे, दैट इज द इंटेंट। Okay. The number one thing which evolved during the last couple of eras, during last couple of years, that is all about the intent. Yep. वो हमने देखा कि Finn started the first ball hitting straight over the head of the bowler and just given a statement to everyone कि हम इस तरह खेलना चाहते हैं। True. तो मुझे लगता है कि वहां से एक टोन सेट हुई। पहले 2 बॉल ने, as you said Zulu, like it given everyone something to watch of the New Zealand because they set up the tone और फिर उसको कंटिन्यू किया गया। मुझे लगता है कि इन 2 बॉल्स ने हम सबको ये दिखा दिया और शायद सीखने वाले सीखें कि कितना इंपॉर्टेंट है टू गेन द मोमेंटम। तो T20 गेम में जब आपने गेन किया है, और देखिए उन्होंने गेन किया पहले 6 ओवर में, पहले 4 ओवर में उन्होंने वो दिखा दिया उनको, उनके मेन बॉलर्स को जब अटैक किया तो वो सडन बैकफुट पे गए। वो कि केन विलियमसन, मैं अभी भी समझता हूँ कि वो बहुत टेक्निकल है, टू मच टेक्निकल। अगर वो थोड़ा सा अपना इंटेंट शो करता तो ये 210-15 करना चाहिए था, लेकिन फिर भी 200 जहां पे 160 पार रन हैं, वहां पे जब आप 40 रन अबव कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक कंफर्ट जोन से भी बाहर निकाल के ले गए अगली टीम को, कि आप सोचने के जीतने के बारे में सोचो भी ना। तो मुझे लगता है कि कंडीशंस को भुला के रियल फ्लेयर ऑफ T20 वी वॉच्ड इन द फर्स्ट गेम। People were thinking about too much about weather condition, pitch condition, but sometimes the flair of the game, basically the intent जो evolve हुआ है, that takes the game away from everyone. Wonderful. We saw him, that obviously discussed that he's going to be somebody that's going to bat deep into the innings. It allows the other people to go a little bit harder, so it's understanding that as well. And I think today we saw that game plan. Where it is going to be interesting is when they probably have to chase a bigger score, where a guy like Kane is now going to have to play differently and he's going to have to contribute in a different way. But he's such a good cricketer that I think he's got that ability to do that. And sometimes we can be frustrated with him because we think he's just so much better than going at a run a ball as he is today. And sometimes that is our frustration with him. But a guy like Jacques Kallis used to do the same thing. We used to be frustrated with Jacques because he was such a good cricketer. He can go faster. But let's see if they need to chase a big score. He's a very good cricketer. I think he's done it in the past as well, Lance, like he's like now his strike rate is low because the last 20 games, but overall, like his strike rate is not that low, but he has the game, when he needs it, exactly. So he can shift the gear. I mean, but Azam, that does not justify. That's what my question is over here, because when we talk about modern day cricket, especially you being a skipper, I think the responsibility comes down to your shoulder. But over here in Pakistan, we've always spoken about Australian pitches and how their paces can actually damage any batting attack as well. So, what do you think made Australia look weak today?
I honestly believe they were they weren't caught off guard, but the way New Zealand played and the intent that they showed, and they disrupted them early on. They kind of almost took a step back and said, wow, we weren't really expecting this, you know, we're expecting more traditional cricket from New Zealand. But, you know, to win a World Cup, you can't be caught on the back foot at all. And I think that's a big lesson for Australia today. And I think one thing I want to add, Australia given themselves a very, very tough chance from here onwards in this tournament, because they lost match badly. Net run rate obviously will come into play, but the way New Zealand won, and also England also, to me, if they will play well, obviously you talk about their win, they couldn't have that momentum, so they wanted to win the game, which is good for them. But still, I think when it comes to Australia, because they lost so badly, they have to cover a lot of areas to get to the next round, because New Zealand and England at the moment seems like after winning the first game, they're gonna go for the next round. But let's see. मैं इसी सवाल के साथ मैं राशिद भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ. राशिद भाई, अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के उन्होंने फैसला किया कि हम फील्ड करना चाहते हैं. मैं यही बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि सेकंड इनिंग्स में सुबह आपने भी ये कहा था 70% रेन है जी, 90% रेन है, बारिश नहीं हुई. वहाँ पे मिस्टेक की इन लोगों ने कि टॉस जीत के कि हम डीएल पे चले जाएंगे, वहाँ पे हमारे पास एक कोटा मिल जाएगा, रन का मिलेगा. बारिश नहीं हुई तो बहुत अच्छी पिच के ऊपर आपने मौका दे दिया. ठीक है. और ये हमेशा नहीं होगा, जो फिन एलन ने किया हमेशा नहीं होगा. इनकी बेस अच्छी बन गई. अगर ये पहले दूसरे ओवर में नेक्स्ट मैच में आउट हो गया तो शायद 150-160 भी ना कर पाएंगे. तो ये टॉस का जो गेम था ना, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट था. और कोई भी टीम होती शायद वेदर फोरकास्ट जो थी उसके ऊपर सेकंड बैटिंग करती, और यही टर्निंग पॉइंट था, टॉस जीत के पहले बैटिंग करना. लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान ने भी यही बोला था कि they would also will go for a ball if they win the toss, but somehow, as you said, losing a toss is a blessing in disguise. लेकिन एक जो चीज थी ना, मतलब वो ठीक है टॉस हुआ, दोनों कप्तान जो है वो पहले बॉलिंग करना चाह रहे थे, लेकिन जो इंटेंट था, जो उसने सारा गेम चेंज किया है कि जो बैकफुट पे जो कहते हैं ना कि फाइट में जो पहला पॉइंट था, जो पहला पॉइंट ने उसको उनको बैकफुट पे लेके गए. और वो जो मोमेंटम था, जो बात हम कर रहे हैं कि वो एक होता है कि एक बंदे ने स्टार्ट किया और दूसरा आके स्ट्रगल कर रहा है, उसने वैसे ही हिट नहीं, लेकिन जिनका रोल था, जो बात उसने केन विलियमसन ने की कि रोल हमें पता है किसका क्या रोल था. अगर आप देखें कि जो जिनका रोल था उन्होंने आके वो रोल प्ले किया है, क्योंकि वो बॉल 1 से दूसरे जितने भी प्लेयर हैं, फिलिप्स को देख लें, वो 7 of 7 किया है, लेकिन वो बॉल 1 से जो है ना वो बॉल को हिट करने की कोशिश की. तो रोल बड़ा क्लियर था. एक चीज और हफीज, एक चीज और ये कर सकते थे कि पावर प्ले में फिंच को स्पिनर्स लेके आना चाहिए. 2 ऑप्शन थे इनके पास, एक मैक्सवेल था, दूसरा रैम्पा थे, तो उसमें हिट मारनी पड़ती फिन को. अभी क्या है, सारे पेसर है 145 प्लस हैं, तो हर जगह जोर से लगी, तो क्या है, आपको पेस डाउन करनी पड़ती है. इसमें आप स्लो स्पिनर लगाते थे, उस पर जोर से मारनी पड़ती है. ऑफ स्पिनर अगर राउंड द स्टंप कर रहा है बॉल आके, तो वो क्रॉस में जाएगी, यहाँ से बढ़ के बाहर निकलेगी ऐसी हार्ड पिच के ऊपर. तो मेरे ख्याल से स्पिनर्स को होना चाहिए था, जो ये ज्यादातर करते नहीं है. रैम्पा को हमेशा 7, 9, 11th ओवर कराते हैं, तो यहाँ पे शायद थोड़ी सी बहुत गलती की है उन्होंने. देखिए, जैसे मैं एक चीज ऐड करता हूँ, जैसे हम बात कर रहे हैं उनके इंटेंट की व्हेन इट कम्स टू देयर बैटिंग, लेकिन जितनी उतनी ही शानदार जो हमने बात की कि जो इनका बॉलिंग अटैक है वो प्रॉपर बॉलर है. उन्होंने वो रोल प्ले किया और कोई चांस ही नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया को. वंस दे गॉट दैट रन्स ऑन द बोर्ड, जो कि मुझे लगता है कि 30 रन्स अबव द पार रन्स थे, उन्होंने जब वो पोस्ट किया तो उन्होंने कोई चांस नहीं दिया, बिकॉज बोल्ड, साउदी, फर्गसन, Santner, they all bowled the way they bowled everywhere. We saw, you know, we expected a little bit more movement, I guess, and Australia kind of kept looking for that movement. They were a lot fuller, a little bit more, and probably not enough pace off. Yeah. And New Zealand did what they did very well, was that they learned from that, and then they executed beautifully. But if you look at Santner as well, it's to your point, he kept the basics right, and then he was able to vary his pace. He didn't do anything too special, and I almost feel like Australia were looking for something else, kept searching in the game, where New Zealand were almost in control. Well, right from that's the what happens when you win the toss and bowl. You're searching for something. You want to get wickets. You know, you're looking for that magical 3 wickets in the power play or whatever it is. And once they didn't get that, they kind of didn't have another plan, and they were really caught off guard. So I thought New Zealand adapted well and learnt very well. And it's proving also that spin in the middle overs is providing a lot of control.
I think New Zealand spinners shared 4 wickets today for 60-odd runs, and that's the control. And we saw Afghanistan spinners as well in the other game, also providing that control. So maybe something to think about for games going forward. I mean, I know it's going to be very interesting, but imagine, you know,